Hey guys, Rom Guruji here, back with another video, and today I am talking about something very important to Iqoo users. You know it's the end of the month and a new update is coming, but do you know what's coming in the new update? Well, you should thank me for that because I have what's coming for the next update. But before we do that, अगर आपको ये वीडियो हिंदी में देखनी है तो प्लीज़ नीचे दिए गए टाइम पे जाके आप ये वीडियो हिंदी में देख सकते हैं. And let's start. So you'll ask me, how do I know what's coming in the new update? Am I connected to Iqoo? No. I am part of the international community for Iqoo 3 and a new update has been released in China, right? So before they release in India, they release in China and then they release in India. So if at the end of the month they release in China, the first week of the month they release in India, right? So let me tell you the basic difference between both the devices, the international one and the Indian one. There is no NFC in the Indian one. Now that we have that out of the way, everything is the same. The updates are usually 90% of the time same. So let me tell you what is going to happen. So the first thing that's going to change is your gesture. So now gestures will have a animation effect on them. So the home gesture, right, when you swipe back to home, is very plain right now. So now it is going to have a spring effect where, you know, you will see this really cool animation while going to home. This just to create kind of a finesse in the phone at the moment and nothing more than that. The second thing that is going to happen is Wi-Fi bug is going to fix. So I don't know if you have observed this. I have observed this quite a bit of time. When the temperature is a bit low, your Wi-Fi kind of switches off. I don't know why. It's a very weird thing. A lot of times I've come home, I've gone out and I've come home again and I see that my Wi-Fi is just off. I don't know why. And I usually keep Wi-Fi on all the time because my network is running all the time. So with that out of the way, I think this would be a good update. But one thing that I really liked in this whole changelog is the camera thing, right? So you know the camera is not very well optimized with the Iqoo 3. It still needs improvement. It still needs better color science. Iqoo is finally doing it. You know, after nearly a year of releasing the phone, they're finally doing it. They are going to optimize the camera. They're going to change the color science. They're going to get better low light photographs. So I really like that. Now you must be wondering, okay, he just told about camera and you know these 2-3 things. Is there nothing more coming? You know, obviously there is bug fixes and performance fix. But other than that, you know what's coming? Android 11. So Android 11 is going to come in the mid of December. You know, so stay tuned with us and if you're liking the video, please like, share and subscribe, guys. It will help the channel a lot. And that was all for this video, guys. If you did like the video, like I said, please like, share and subscribe, and I'll see you in the next one. And let's move to Hindi now. Guys, कैसे हो? मैं रोम गुरुजी और मैं आज आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ लाया हूँ Iqoo 3 यूजर्स के लिए. आपको पता होगा मंथ एंड हो चुका है, आपका अपडेट आने वाला है, पर आपको ये पता है अपडेट में क्या आने वाला है? मैं बता रहा हूँ आपको. मैं कोई Iqoo से कनेक्टेड नहीं हूँ, इंटरनेशनल कम्युनिटी का पार्ट हूँ, तो मुझे एक स्क्रीनशॉट मिला जहाँ पे एक नया अपडेट रिलीज़ हुआ है चाइना में. सो वो जब चाइना में रिलीज़ होता है उसके कुछ दिन बाद इंडिया में रिलीज़ हो जाता है. तो अपडेट में मैं पहले बताता हूँ इंडियन और वो डिवाइसेस में डिफरेंस क्या है. तो हमारे पास NFC नहीं है, उनके पास NFC है. तो वो चीज़ साइड में रखते हुए मोस्ट ऑफ द अपडेट सेम होता है. तो मैं पहले आपको बताता हूँ पहली मेजर चीज़ क्या आ रही है. तो जो जेस्चर नेविगेशन है उसमें एनिमेशन ऐड होने वाला है. तो वो जो एनिमेशन है उसमें एक स्प्रिंग इफेक्ट होगी. तो जैसे आप होम जाएंगे तो होम एनिमेशन में एक स्प्रिंग इफेक्ट आएगी. तो एक काफ़ी फिनेस ऐड करने की कोशिश करें डिवाइस में, वो बहुत बढ़िया है. दूसरा जो चेंज होने वाला है वो जो वाईफाई बग है. तो आई डोंट नो आपने ऑब्जर्व किया है या नहीं कि काफ़ी बार आप फ़ोन रख देते हो और अगर फ़ोन का टेम्परेचर उतना नहीं है तो वो वाईफाई अपने आप ऑफ हो जाता है. तो मुझे नहीं पता उसका रीज़न क्या है, क्यों है, बट अब वो बग फिक्स करने वाले हैं. तो वाईफाई ऑटोमेटिकली ऑफ नहीं होगा लो टेम्परेचर्स में, या ऑन होने से मना कर देगा लो टेम्परेचर्स में, ऐसा भी नहीं होगा. जो तीसरी चीज़ जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, Iqoo फाइनली कैमरा ऑप्टिमाइज़ करने वाला है. तो जो इसमें आपकी लो लाइट फोटोग्राफी है, कलर साइंस है, वो अपग्रेड होने वाला है. तो आपका जो कैमरा है वो एक बेटर आउटपुट देगा, जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. इसका हार्डवेयर इतना अच्छा है बट जो लो लाइट फोटोग्राफी है इतनी अच्छी नहीं है. तो वो इम्प्रूव होने वाला है. बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बहुत अच्छा होने वाला है. इसके बाद जो अगली चीज़ आने वाली जो मेरे हिसाब से आपको मुझे बताना चाहिए, Android 11 का अपडेट आएगा मिड दिसंबर के आसपास से. अफवाहें चल रही हैं, तो हमारे साथ स्टे ट्यून रहिए. वीडियो पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको Android 11 की न्यूज़ देंगे. ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही था. शॉर्ट वीडियो था आपको बस बताने के लिए कि देखो अपडेट में क्या आ रहा है. पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो गाइज, एंड आपको अगले वीडियो में मिलते हैं. चलो बाय बाय.